guys, welcome back to my YouTube channel. Today I'm going to show you all how to make basic eggless cupcakes. Be it a Valentine's Day or your kid's birthday or your parents' anniversary. This easy recipe will turn your day into a special one. It's hot pink pitaya cupcakes. Let's start. Icing sugar can be easily prepared at home in case packed icing sugar is not readily available in your pantry. दोस्तों, हमें आइसिंग बनाने के लिए आइसिंग शुगर की ज़रूरत होती है। आज मैंने घर में ही आइसिंग शुगर प्रिपेयर कर ली है चीनी पीस के। इस रेसिपी में आप मक्खन का या तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Similarly, edible oil is a good choice even though butter or margarine can be used as well for the cupcake batter, my friends. To start with the cupcake batter, I am taking 1 cup of granulated sugar. 1 कप चीनी लेने के बाद अब हम आधा कप तेल डाल रहे हैं। आज मैं तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। Half cup of edible oil goes in. Vanilla essence 2 teaspoon. This is completely optional. दोस्तों, ध्यान रखने की बात यह है कि बैटर बनाने के लिए हमें इसमें कोई भी मिश्रण ज़्यादा बीट नहीं करना है। My friends, please be careful not to overbeat this mixture in any case. 2 cups of simple white bread flour, maida 2 cup. Now I'm taking baking powder 1 teaspoon and baking soda half teaspoon. कुछ लोग बिल्कुल समान भाग में बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालते हैं। मैं ज़्यादातर अपनी रेसिपीज़ में बेकिंग पाउडर ज़्यादा डालती हूँ और सोडा थोड़ा सा कम डालती हूँ। Milk half cup. So friends, here you can take the color of your choice. According to me, gel color is much more better than liquid food colors. That is my point of view. And for the perfect cupcake batter, this batter should not be too runny. If it gets too runny, then your cake will be a failure. Here I got pink pitaya powder, which is dried dragon fruit powder. I ordered this from Amazon.in. It has a wonderful vibrant pink color. Adding this to the recipe is totally optional. You can prepare the cupcakes without this ingredient as well. दोस्तों, इस रेसिपी में कुछ सामग्री ऑप्शनल है। आप चाहें तो वह नहीं भी डाल सकते, जैसे कि सिरका मैं डाल रही हूँ, सिरका आप छोड़ सकते हैं। मैंने ड्रैगन फ्रूट का पिंक पाउडर डाला है, वह भी आप छोड़ सकते हैं। तो अभी डालते हैं हम आधा भर के ये टिन में अपना बैटर। इसको आधा ही भरना है, अदरवाइज़ ये बाहर भी आ सकता है बेकिंग के दौरान। Here I have started the preparation for the icing, which is vegan. For the frosting, I am taking plant-based butter, which is mandatory to use in this recipe.
दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो मक्खन मैंने जमा हुआ ही यूज़ किया है, पिघला हुआ नहीं, ताकि हमारी आइसिंग आराम से तैयार हो सके। I am gradually adding the icing sugar. It is around 8 teaspoons. So gradually adding this to the icing mix. Now this is the desired consistency of the icing which we require to decorate our cupcakes. Our flavorful cupcakes are ready with ingredients usually available at home. These soft cupcakes and cake taste just awesome. My kids love these a lot, and I'm sure you're gonna try this recipe at your home because the ingredients also are readily available. If you like my recipes, please give a thumbs up. I will be coming up with many more great recipes like this. Keep watching Hot Puri's Kitchen, Living and Gardening. Thanks for watching. Stay safe, stay healthy, enjoy your day. Bye bye. चलिए दोस्तों, आज का यह एपिसोड यहीं पर समाप्त करते हैं और मुझे उम्मीद है आपको यह रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ अगले एपिसोड में।